Hello everyone, how are you? I hope you are all well and you must have seen my previous videos also. Today I am going to explain a very important topic, that is resistivity. It is from electricity, class 10th physics. Before that I have explained resistance and factors affecting resistance of a wire. So today I am going to explain a special property of conductor, that is resistivity. Right, so let's start. I am Jasveer Toor from Toor Academy. So what is resistivity? I have written here the definition of resistivity. So what is resistivity? It is resistivity of a substance is the numerically equal to the resistance of a rod or a conductor or of a wire which is 1 meter long and the area of cross section is 1 square meter. So it is a special resistance of a conductor, of a rod, of a wire which is having 1 meter length and its area of cross section is 1 square meter. This is known as resistivity. I have written here the definition of resistivity, that is resistivity of a substance is numerically equal to the resistance of a rod. एक ऐसी rod that is having 1 meter long, जिसका length is 1 meter and area of cross section is 1 square meter, right? So this special resistance is actually known as resistance. As we know that resistance depends upon a number of factors like length of the wire. If you increase or decrease the length of a wire, then resistance will increase or decrease. If you increase or decrease the area of cross section of a wire, then its resistance also increase or decrease. बट दिस रेजिस्टिविटी में हमने क्या किया है, हमने इसकी लेंथ फिक्स कर दी है, दैट इज़ 1 मीटर एंड इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी हमने फिक्स कर दिया, दैट इज़ 1 स्क्वायर मीटर. सो दैट पर्टिकुलर रेजिस्टेंस ऑफ अ रॉड which is numerically equal to the 1 meter long, length is 1 meter long and area of cross section is 1 square meter. Then its resistance को ही हम क्या कहने लग जाते हैं, resistivity कहने लग जाते हैं. और इसका एक थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट भी है कि हाउ टू फाइंड आउट द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल. तो उसके लिए हमारे पास ये है, देखो कि इससे पिछले वीडियो में मैंने बताए थे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस. तो उसमें that is resistance is directly proportional to the length of the wire. If you increase the length of the wire, resistance will increase. And number 2 is resistance is inversely proportional to the area of cross section. It means if you decrease the area of cross section, resistance will increase, and if you increase the area of cross section, यानी कि उसकी thickness अगर आप बढ़ा देते हैं, then resistance will decrease. So these are the two equations. Resistance is directly proportional to length and resistance is inversely proportional to area of cross section. When you combine these two equations, then your this equation will become R is directly proportional to L, length of the wire, and R is inversely proportional to area of cross section. So ये equation हमारी बन गई. इसके बाद for calculation you will have to remove the sign of proportionality. तो ये जो आपने साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का यहाँ पे लगाया है, यू विल हैव टू रिमूव इट. उसके बजाय इन प्लेस ऑफ दैट वी हैव पुट अ कांस्टेंट. दिस कांस्टेंट इज नोन एज RHO, रो, एंड इट इज नोन एज रेजिस्टिविटी. सो दिस कांस्टेंट यहाँ पे आपने बाय रिमूविंग दिस साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज इक्वल टू का साइन लगा के एंड रो, दिस साइन ये जो आपने लगाया यहाँ पे, यू कैन राइट लाइक दिस इज रो, RHO, एंड इसको हम कहते हैं रेजिस्टिविटी, राइट. तो इफ़ यू पुट दिस रो हेयर, तो आपका रेजिस्टेंस अगर हमने यहाँ पे आप ले आते हैं, तो ये रो इज इक्वल टू रो इंटू L ओवर A, R इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ ऑफ द वायर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ये आपका आया. इफ़ यू थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर लेते हैं, तो हम रेजिस्टिविटी, इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट द रेजिस्टिविटी ऑफ अ रॉड और अ वायर, तो रेजिस्टिविटी आप यहाँ ले गए और आपका फॉर्मूला बन गया R इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिवाइडेड बाय लेंथ.
तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऊपर आ जाएगा। इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट द रो की वैल्यू, दैट इज रेजिस्टिविटी की वैल्यू, तो ये आपका फार्मूला विल बी मॉडिफाइड स्लाइटली, दैट इज आर, ये आर आपका इधर आ गया एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऊपर चला गया, लेंथ ऑफ द वायर नीचे आ गई। सो ये थोड़ा मॉडिफाई कर दिया हमने। इसके बाद यहाँ पे यू विल हैव टू, अभी मैंने आपको डेफिनेशन में बताया कि रेजिस्टिविटी इज रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर विच इज़ 1 मीटर लॉन्ग and its area of cross section is 1 square meter. तो यहाँ पे instead of putting A and L, you can put area of cross section 1 meter square and length is 1 meter, right? तो आपका ये रो जो है क्या बन गया, अगर ये 1 मीटर है स्क्वायर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ ऑफ द वायर इज ऑल्सो 1 मीटर स्क्वायर, 1 1 कैंसिल हो गया, आपका ये फॉर्मूला बन गया रो इज इक्वल टू आर रेजिस्टेंस, यानी कि रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू आर। कौन से आर की, जिसकी लेंथ, रेजिस्टेंस कौन सा है वायर का, जिसकी लेंथ है 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 स्क्वायर मीटर। सो ये बन गया आपका रेजिस्टिविटी बिकम्स इक्वल टू आर। 1 1 ये कैंसिल हो गया इसका और रो दैट इज रेजिस्टिविटी बिकम्स इक्वल टू आर, रेजिस्टेंस के बराबर है। एंड व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ दिस रेजिस्टिविटी? SI unit of resistivity is, how to find out the SI unit of resistivity, कि अगर आपका 1 मीटर स्क्वायर है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड द लेंथ इज 1 मीटर, तो 1 मीटर आपका रह गया क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय मीटर, सो इट विल रिमेन मीटर। तो R का जो रेजिस्टेंस है उसकी SI यूनिट इज ओम मीटर। ओम का सिंबल इज दिस, ओम meter. So what is the SI unit of resistivity? That is ohm meter. And what is resistivity? It is a special resistance of a wire which is 1 meter long and its area of cross section is 1 square meter. So this is all about resistivity. In my next video we will do differences between resistance and resistivity. 4-5 differences इसके बनते हैं, so I will explain those differences. So thank you so much for watching my video and keep on watching my videos, and if you like them then please subscribe them and share with your friends. Thank you so much for watching my video.